Hello students, welcome to my channel. In last video we have discussed how many types of reactions, and these were combinations, decomposition reactions, displacement out of two types, single displacement and double displacement. Likewise, acid base reaction. Acid base means when acid combines with any base it becomes neutralized. That is why it is called neutralization reaction. Then combustion reaction means in presence of oxygen, and combustion is also known as oxidation. And finally, oxidation reduction. So these 7 types of reactions we are going to discuss right now. So start with combination reaction or redox reactions. Now, let us begin with combination reactions. A combination reaction is one in which two or more reactants combine to form a single product. The reactants may be elements or compounds. The general form of the reaction is A combines with B to form a single substance, C. For example, coal burns in oxygen to form carbon dioxide. In this reaction, the two elements, namely carbon and oxygen, combine to form a single product, carbon dioxide. Cold. Let's take another example of calcium oxide reacting with water to form slaked lime. Calcium oxide reacts with water and it forms calcium hydroxide. Why it is written CaOH twice? Because valency of calcium is +2, 2 charges, and hydroxyl valency is charges -1. Whenever we write any formula, we just interchange the valencies. See, -1, hydroxyl having charge -1, calcium ion having charge +2, right? When we combine the formula, we must write it CaOH. Now, interchange the valency, +2 right here and -1 right here. We don't apply sign, we just apply digit CaOH twice, OH whole twice. आप लिख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट? तो बोलने में क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट इट इज रिटन लाइक दिस CaOH होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस. दैट मीन्स इसको आप ऐसे भी कर सकते हो. आप डेफिनेशन कैसे करोगे? डिफाइन आप ऐसे करोगे कि एक कैल्शियम आयन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्सिल का एक आयन चाहिए, करेक्ट? तो कैसे लिखोगे? कैल्शियम आयन is balanced with 1 hydroxyl ion, and it is the charge, it is the valency over here. Now take another example. Or calcium hydroxide. Slaked lime. In this reaction, the two compounds, namely calcium oxide and water, combine to form a single product called slaked lime. You must remember that a combination reaction has many reactants, but only one product. Note it down. Decomposition reactions are the opposite of combination reactions. Decomposition. See, we have discussed combination. Combination means A plus B. These two combine to give C, suppose. Now, this is called combination, right? So we can write it combination. Now, reverse of this will be called decomposition, right? Decomposition means C gives A plus B. तो क्या बोलेंगे? C और C स्प्लिट हो रहा है A और B में. देखो मैं यहाँ पे बहुत अच्छी रिएक्शन दिखाता हूँ. सपोज आपको मैंने एग्जांपल दिया था शुगर के लिए, C12 फॉर्मूला, H22O11, राइट? इसे आप वाटर से कंबाइन करते हो. यू आर मेकिंग जस्ट शुगर सिरप, देन दिस इज शुगर एंड दिस इज वाटर. व्हेन sugar combines with water, it gives, right, it gives C6H12O6
plus C6H12O6. These two molecules are produced by one reactant. Now this is called decomposition, or you can say it digestion. Is it? Now reactions are those in which a substance splits into two or more simpler substances. suppose left hand side is The what? general form of a decomposition reaction is AB decomposes to give. Now see AB. AB is bonded with. AB is, suppose karo, it is bonded with B. A is bonded with B. That means AB is bonded. Maybe it is ionic bond, maybe it is covalent bond. We will discuss ionic, covalent and coordinate bonds. We will discuss types of bond. But first of all, we have to discuss what is decomposition, what is combination. So decomposition means if two elements are bonded, somehow, anyhow, because of any factors, any climatic factors, any kind of change occurs, it splits into two अलग-अलग. Correct? कैसे? A plus B. तो क्या बोले? Decompose हो रहा है ना ये? देखो. A and B. Decomposition reactions use heat, electricity, or light energy. बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है तो कैसे हो रहा होगा? इंटरेस्टिंग पॉइंट है. अगर किसी चीज को दो पार्ट में करना है तो आप उसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर लगाओगे. एक्सटर्नल फैक्टर मे बी हीट, मे बी करंट, मे बी लाइट. इज इट? कैसे? बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए. अगर सपोज करो हमारे पास वाटर है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O. H2O को अगर हम हीट करें तो क्या बनता है? आपने देखा होगा ये स्टीम बनेगा. क्या बनेगा? स्टीम. और स्टीम को भी हम हीट करें तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा. इज इट? तो ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस वापस हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? स्टीम फॉर्म में निकल आएंगे. तो क्या है ये? आप अल्टीमेटली आप किसे किसे क्या कर रहे हो? डिकम्पोज कर रहे हैं. डिकम्पोजिशन जो एक कंपोजिशन है उसे आप डी का मतलब होता है रिमूव, डी का मतलब होता है ब्रेक डाउन. तो जब भी टर्म बोल रहे हैं डिकम्पोजिशन, सो डी मीन्स ब्रेक एंड कंपोजिशन मीन्स कंपोजिशन. ऑफकोर्स एक कोई कंबाइंड फॉर्म में उसे आप रिमूव कर दें, ब्रेक कर दें. देखें नेक्स्ट. Decomposition through the action of heat on a substance is How called is this? thermal decomposition. हीट करने For से कोई example, डिकम्पोज हो रहा हो, थर्मल डिकम्पोजिशन. Calcium carbonate on thermal decomposition gives calcium oxide or quicklime Quicklime and it is called. carbon dioxide. See, calcium carbonate, CaCO3. It is called stone. You know, the formula of stone is calcium carbonate, CaCO3, calcium carbonate. Now it is, see, what is the feature? CaCO3, it gives calcium oxide. Why it is calcium oxide? जबकि आपने बोला था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में लिखते थे CaOH ट्वाइस, ऐसे लिखा था आपने. बट यहाँ पर CO, उसका रीज़न है क्योंकि देखो कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज होते हैं और ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होते हैं. तो देखो +2 और -2 एक जैसे हो गए ना, +2 एंड -2. तो आप क्या कहोगे? अगर किसी पे ये मान लो A प्लस है और B माइनस है तो अल्टीमेटली कंबाइंड को क्या लिखेंगे आप? A एंड B. इफ इट इज ये -2 होता तो आप कैसे लिखते हैं इसको? A2B लिखते. क्यों? आप ये वैलेंसी इधर ले आओगे, ये वाला इधर ले आओगे. साइन नहीं लगाते. साइन कन्वेंशन के हिसाब से साइन प्लस माइनस साइन नहीं अब वो करते हैं. आप केवल क्या लिखोगे? उसकी डिजिट वैल्यू वाइज. ठीक है. तो इसे देखेंगे हम लोग एक एक पॉइंट करके. तो कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स, सी, कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है? +2 साइन होता है और ऑक्सीजन पे क्या होता है? -2 साइन है. तो आप -2 इधर लाओ, +2 इधर लाओ, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? CaO +2 -2, क्योंकि दोनों एक जैसे डिजिट हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं. सबको ईजी फॉर्म में रखते हैं. नेक्स्ट. Decomposition of a substance by passing current through it is called electrolysis. For example, when electric current डिकम्पोजिशन करना यानी किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करना है, उसके कॉम्पोजिशन को ब्रेक डाउन करना है, तो करंट के थ्रू, with the help of current or electricity, when a substance gets divided into two or many kinds, it is called electrolysis. Term is
इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. इलेक्ट्रो मीन्स करंट, यू नो, करंट. And where term you will use lysis. Lysis means breakdown. Lysis means breakdown. Whenever you see the term lysis, suppose I am using hydrolysis. What do you mean by hydrolysis? Hydrolysis. Hydro means water, lysis means breakdown. Breakdown in presence of water. For example, we are taking example of sugar. Formula was C12H22O11, right? In presence of water, if sugar gives two molecules, C6H12O6 plus C6H12O6, it is also called breakdown in presence of water. So sugar is broken down in presence of water. Now taking the example, is passed through acidified water. It decomposes to give hydrogen gas and oxygen gas. Water is converting into two gases, hydrogen gas Finally, and the oxygen. decomposition reaction resulting from action of light energy If light called is involved. photolysis. For example, when silver Photolysis. chloride See, is exposed to light, photolysis. Now we are taking again lysis. Photo and lysis. Lysis means breakdown again. Photo means light. And lysis means breakdown. So any reaction, that means anything which is broken down into another substance, another two substance, another three substance, in presence of light, it is called photolysis. Breakdown of any chemical reactant into its component in presence of light is known as photolysis. Is it? Lysis means breakdown. Photo means in presence of light. Now see the reaction. it decomposes to form silver metal टेक and एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर chlorine क्लोराइड. gas. सिल्वर क्लोराइड में अगर हम सनलाइट प्रोवाइड कर दें, अगर हम यानी कि सिल्वर क्लोराइड हमारे पास सोल्यूशन, हमारे पास कोई सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन है, AgCl इसको बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड, इसको हम सनलाइट में खाली रख दें तो क्या हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, क्लोरीन गैस इवेपोरेट हो जाएगा. ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लोरीन गैस निकल जाएगी, तो केवल यहाँ पर सिल्वर डिकम्पोजिशन मेटल हो जाएगा, सिल्वर सॉल्ट बन के अलग हो जाएगा. सिल्वर जो सॉल्ट था अब किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर मेटल में, ये सॉलिड हो जाएगा, और जो ऊपर क्लोरीन निकल रही है वो क्या है, गैस है, ये गैस फॉर्म में निकल जाएगा. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट वन इन नेक्स्ट वीडियो.